Today we will discuss about the electric field due to uniformly charged thin spherical shell. This is the third application of Gauss's theorem. The first two applications of Gauss's theorem were, if you remember, due to infinite thin wire or line charge. Second was thin sheet, and this is thin spherical shell. So again we will write consideration here, and in the consideration what we will write: consider a spherical shell of radius capital R. It is hollow thin spherical shell, and the charge is residing on the surface of this spherical shell, and capital R is the radius of this spherical shell. Now consider point P. So point P will be considered at three different places. Number one, inside the shell, on the surface, and outside the surface. So we can say this is P1, this is P2, this is P3. So at these 3 points, so we can change the statement. Now consider point P1, P2, and P3 inside the shell, on the surface, and outside the surface, respectively. So first we will draw a Gaussian surface for point P1. So if we draw a Gaussian surface for point P1, with a green this thing we've drawn, so the flux phi P1 coming out of the first Gaussian surface, the flux phi P1 coming out of the first Gaussian surface P1 can be written as the charge enclosed by the Gaussian surface and the permittivity of the space. So how much is the charge enclosed by this P1? We will write here, since the charge is on the surface of shell. So charge is on the surface of the shell, hence there is no charge inside this Gaussian surface where my cursor is moving actually. There's no charge here.
So what we can write? The charge here is 0. If the charge is 0, then the flux will be 0 upon epsilon, that is 0. So we can say the flux through the Gaussian surface which is passing through the point P1 is 0. Now draw a Gaussian surface for the point P3 which is outside the spherical shell. I will redraw a diagram for that here. This was the spherical shell and point P3 was here. So if you draw a Gaussian surface for this, and you will write the equation for the flux. The flux through the Gaussian surface passing through P3. So what we can write? Phi P3 is equal to charge enclosed by this Gaussian surface upon epsilon. Now here, the Gaussian surface enclosed the total charge. The whole charge means whatever was present on the surface of the shell, it was covered by this Gaussian surface, so it is inside it. So we can write in this equation phi P3 is equal to Q by epsilon, which is the total charge enclosed by. This was the first method according to Gauss's theorem. Now what do we have to find out? We have to actually derive the expression for the electric field at point P3. So consider a small surface area at P3. So if you see, I'll draw this diagram again. If this is the charged spherical shell and this is your Gaussian surface which is passing through this point P3, and at P3 if I consider a small area of this Gaussian surface which I have drawn, and the area vector of this is, let us say, dA, and the electric field which is coming out of this shell will also be like this. So small surface area at P3 with area vector dA, the electric field is outward and in the direction of dA. That means the dA and E are in the same direction, therefore angle will be 0. So the flux can be written as, flux P3 can be written as electric field into area vector. So this will be the small flux.
coming out of the small area. So to calculate the total flux, integrate above equation between the limits. What will be the limits? 0 to the total area of the sphere. And what is the area of the sphere? Means the surface area. 4 pi r square. So to calculate this total flux, we will integrate it between the limits 4 pi r square EdA. So we can write E into 4 pi r square. After integration, we will get this result, P3. So now if you see, this flux which we have derived here, Q by epsilon, this flux is also passing through this whole Gaussian surface, which is passing through this point P3. इस पूरे Gaussian surface में से total flux जो pass कर रहा है वो ये pass कर रहा है according to Gauss's theorem, and according to the other formula which we have, that is electric field into area, the flux is passing this much. So from equation 1 and 3, from equation 1 and 3, since LHS are equal, दोनों फ्लक्स की वैल्यू तो सेम ही होगी ना टोटल, therefore RHS will also be equal. So we'll write E Q by epsilon is equal to E dot 4 pi r square, or we can write E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by r square. So this will be the value of electric field. Now please listen carefully. This will be the value of electric field at point P3 outside the spherical shell. अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो फॉर्मूला हमारा किसके लिए था, कूलम्स लॉ, यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए. तो इसका मतलब क्या होगा, ये कब एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल when r is very much greater than small r is very greater than capital R. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैपिटल R क्या एज्यूम किया था हमने. कैपिटल R एज्यूम किया था हमने रेडियस ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r P3 का डिस्टेंस था. ठीक है, तभी तो हमने उसका जो एरिया लिया था लिमिट लगाने के लिए वो 4 पाई r स्क्वायर लिया था, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस का था. ये जो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर है और ये चार्ज है अंदर, तो इसका अगर हम एरिया लेते हैं ये तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, और इस वाले का जब एरिया लेंगे तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा.
तो ये हमने इसका एरिया लिया था जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट का जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर से बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज। नाउ with the charge on that spherical shell q, क्यू ही चार्ज एज्यूम किया ना हमने। Yes, sir. Consider that the surface charge density is sigma। मतलब कि ये जो स्फीयर हमने एज्यूम किया है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस आर है, तो टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में? ये जो टोटल चार्ज है इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो तुम्हें याद होगा जब हमने लिखा था टोटल चार्ज, तो सरफेस पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी टाइम्स एरिया। याद आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी टाइम्स एरिया, जैसे शीट में हमने लिखा था। Yes, sir. तो यहां पे एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। और अगर Yes, sir. मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सिग्मा है तो ए सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? A sigma. ए सिग्मा। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है। तो ये टोटल चार्ज हो गया। अगर इसकी वैल्यू तुम पिछली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां तुम सब्स्टिट्यूट कर दो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इतना समझ आ गया? Yes, sir. Now, if you remember, we considered one point on the surface of the shell, that was P2. तो अगर P2 की बात करें तो P2 का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? अगर P2 सरफेस के ऊपर है तो P2 का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? R ही होगा, Capital R. कैपिटल आर होगा ना। सो फॉर पॉइंट P2 small r is equal to capital R. Therefore, from this equation, sigma by epsilon capital R square upon R square, तो इस R की जगह कैपिटल R रख दो, तो sigma by epsilon. So what did we get? E is equal to sigma by epsilon for the value for the point which is on the surface, at the surface of this. क्लियर हो गया? Yes, sir.
Now let us understand this graph which is given here. This graph is important, and sometime it comes of 1 or 2 marks, and it is the graph of electric field with respect to the distance. If you remember, we draw the graph of the variation of electric field for a point charge, याद है? For a line charge, for a sheet. इन तीनों के लिए हमने वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था ना? Yes, sir. ठीक है. अब मान लो हम इस स्फेरिकल शेल को का सेंटर इस यहां एज्यूम करते हैं. ये सेंटर है और ये उस स्फेयर का, कौन से स्फेयर का? जिसके ऊपर चार्ज है. So this is the sphere which is having a charge. तो ये उसका सेंटर है और ये इस ग्राफ का ओरिजिन है. तो अगर तुम्हें याद होगा, सेंटर से लेके सरफेस तक हम जितने मर्जी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें, उसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा? ये सारे गॉसियन सरफेसेस हम. So we're talking about these Gaussian surfaces which I have drawn, these red color. Since they are inside the shell, they are enclosing nothing, no charge in them. So flux is zero. So electric field will also be zero. So this red line is expressing the electric field. Since the y coordinate is zero, it will be expressed on the x coordinate because x is increasing and y is zero. Electric field is zero, but r is increasing. Started from origin till the surface. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम हुई और उसके बाद फिर डिक्रीज होके धीरे धीरे डिक्रीज होती चलेगी. Yes. While drawing this graph, please ensure that this curve should not touch with this axis. ये उसके थोड़ा ऊपर ही रहे. Yes. ठीक है. अगर तुमने उसके साथ टच कर दिया तो इसका मतलब तुम ये शो कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जाके इंफिनिटी पे जीरो होती है. Yes. So this graph is important for 1 mark to express. Is it clear now? Yes.